दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? व्हाट्सअप विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. माय माइक्स बैकअप सिस्टम लुक्स अ बिट लो. बस की मदद करनी चाहिए. ओके, दिस स्टार्ट्स चार्जिंग. एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं आ रहा हूँ. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? भाई वीकेंड आते आते तक मैंने देखा कि बच्चे जिस तरीके से गायब होना चालू होते हैं, जैसे जैसे वीकेंड पास आया वैसे वैसे बच्चा गायब. एक ही मिनट, मैं बस ये अपना माइक सिस्टम चार्जिंग पे लगा देता हूँ. मधु, मेरे को प्लीज एक ऊपर ब्लैक कॉफी भेजेगी, कोई है क्या? ठीक, आराम से 5-10 मिनट बाद दे तब भी चलेगा. आर यू यस दोस्तों? ओके पीपल, लाएं दोस्तों. अच्छा, क्या प्लास्टिक वेस्ट? सर वीकेंड का भी पता नहीं चल रहा, थोड़े से दिन की बात है. उसका तो वीकेंड और पार्टीज करोगे तुम बढ़िया एकदम टकाटक. चलो भैया, तो एक लास्ट चीज आप ही करा दें और यहां पर आपका अमेंडमेंट सीजन खत्म हो जाएगा एंड देन वी कैन रिज्यूम विथ आवर रिविजन्स. अच्छा दोस्तों देखो, वैसे मेरा मन था कि मैं 30 तक रिविजन्स क्लोज करने वाला था, बट देन आई रियलाइज कि अपनी 2-3 एडहॉक छुट्टियां हुई और 2-3 लेक्चर्स आपके यहाँ अमेंडमेंट्स में चले गए. सो आई एम एक्सटेंडिंग योर रिविजन सीरीज फॉर अनदर 4 डेज. तो 4 दिन और रिविजन्स करवाता हूं, जिसमें अपन अपना बोर्ड वाला चैप्टर खत्म करते हैं और साथ साथ में आपका ये वाला चैप्टर 18-19 इस वाले चैप्टर्स को भी रिविजन करवा देता हूं आपको. ठीक है? Harshada says, sir, I have been a self-study student ESG from module and the syllabus seems and feels so vast. Harshada, you could drop down to my notes for one segment. जो भी बहुत irrelevancy वो मैंने कट कर दी, so you probably you will find the notes much more composed and on point as against जितना ज़्यादा मॉड्यूल में दिया हुआ है. Okay people, come over here to green initiatives. अच्छा एक सेकेंड, क्या आप लोगों ने मेरा आरएम का रिवीजन ऑलरेडी देख लिया है? क्या आप लोगों ने मेरा आरएम का रिवीजन ऑलरेडी देख लिया है? आरएम भी मैंने अभी ही कराया था, आप लोग के बैच का ही करवाया था. आरएम इफ यू रिमेंबर विथ माय पीपीटीज. आरएम देख लिया था क्या? यू वांट मी टू डू द आरएम रिवीजन वंस अगेन? ठीक है, काम करते हैं, पहले मैं ये खत्म करवा लेता हूं, उसके बाद आपसे पूछ लेता हूं कि क्या आरएम का रिवीजन वापस चाहिए कि नहीं चाहिए. इसके ऊपर वापस हम चर्चा कर लेंगे. As of now, you are over here. Okay. Last topic था चैप्टर 15 का, ग्रीन इनिशिएटिव्स का, दैट वाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. अच्छा देखो, वैसे तो ये चैप्टर्स एनवायरमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव मेरे को इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि बस फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस आपको बता दिया गया है दैट द कंपनी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, बट डजंट रियली सीम सो इंपॉर्टेंट टू मी. बट देन ऐसी चीजें जब अमेंडमेंट्स में आ जाती हैं तो ये बहुत ही ऐसे ना लाउड एंड क्लियर हो जाता है कि काफी चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में टर्न अप भी हो जाए, क्योंकि इनको अमेंडमेंट से कुछ पूछना भी होता है एंड प्लस ये वो चैप्टर्स है जहां बच्चा बेचारा वैसे ही बहुत तंग हो रहा होता है, तो इधर से अमेंडमेंट्स में से आ जाता है. और हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि जो बहुत ही वेस्ट चैप्टर्स होते हैं उसके अमेंडमेंट्स में जो दिया हुआ होता है वो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एज अगेंस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके. ठीक है, ओके, ठीक है देन. तो दोस्तों अपन ये पढ़ लेते हैं. सो मैं कहना सर सॉल्व पास्ट फ्यू पेपर. बाबू पास्ट फ्यू पेपर्स कैसे सॉल्व कर सकते हो ना आप, क्योंकि टेक्निकली 2 ही तो अटेम्प्ट हुए एंड इट सीम डिफिकल्ट बिकॉज हाँ एग्जैक्टली आपने ओल्ड सिलेबस सॉल्व किया होगा ना. ओल्ड और न्यू सिलेबस में काफी फर्क है, अप्रोच भी अलग है, तरीका भी अलग है, तो होता है ऐसा. ठीक है,
सो यू डोंट हैव टू सॉल्व ओल्ड सिलेबस पेपर्स। आप आईसीएसआई के पेज पे जाकर न्यू सिलेबस का डॉक्यूमेंट निकालें और वो सॉल्व करके देखें, वो आपको इजी ही लगेगा और आराम से आप कर भी पाएंगे। कूल। चलो दोस्तों, एक लास्ट आंसर लिखा दूं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। ऑल्दो अपन ने पढ़ा हुआ है पर इसके अंदर कुछ एनहांसमेंट्स है, इसी वजह से मैं आंसर लिखाना चाह रहा था। बोलू 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 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। कूल, लेट गो। नोटबुक्स रेडी हैं, गो अहेड। Cool start. Plastic has been plastic has been present. Plastic has been present almost plastic has been present in almost everything which is being used by us, which is being used by us. However, there is a lack of sustainable plastic waste management. However, there is a lack of sustainable plastic waste management. प्लास्टिक तो बहुत यूज कर लिया आप लोगों ने, बट देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। वो मेरी प्रीवियस गर्लफ्रेंड प्लास्टिक कहीं की, काश मुझे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पहले आता। हाँ जी, सो however there has been lack of sustainable plastic waste management which poses a threat to the environment, which poses a threat to the environment, which poses a threat to the environment. Which poses a threat to the environment. Next point. Plastic waste. Next point. Plastic waste. Next point. Plastic waste is one of the key contributors. Is one of the key contributors. Is one of the key contributors for creating unsustainable surge in waste. For creating unsustainable surge in waste. मैम आसपास नहीं, नहीं ऐसे जोक उसके सामने मारूं तो प्लास्टिक से मारे मुझे। Unsustainable surge in waste. Next point. हेड डालना environmental issues on disposal of plastic waste. Environmental issues on disposal of plastic waste. Environmental issues on disposal of plastic wastes. हाँ जी। A. During their production, various types of gases are released. During their production, various types of gases are released. During their production, various types of gases are released.
बी dumping of plastic waste on land, dumping of plastic waste on land makes the land infertile, makes the land infertile. Makes the land infertile. तीसरा, burning of plastic generates toxic emissions. Burning of plastic generates toxic emissions. नेक्स्ट, लिटर्ड प्लास्टिक मतलब जो प्लास्टिक आपने फेंका, gives unaesthetic look in the city, gives unaesthetic looks in the city. Gives unaesthetic look in the city. Okay, next step. नेक्स्ट हेड डालेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉम्बैटिंग प्लास्टिक वेस्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉम्बैटिंग प्लास्टिक वेस्ट. ओके, A, through the Recycled Plastic Manufacture and Usage Rules 1999, through the Recycled Plastic Manufacture and Usage Rules 1999, through the Plastic Manufacturing and Usage Rules 1999, the minimum thickness of plastic bags has been suggested. The minimum thickness of plastic bags has been suggested, which allows the recycling of the plastic, which allows the recycling of the plastic. Which allows the recycling of the plastic. Next, plastic, next point is the plastic waste management rules emphasizes on plastic waste management rules emphasizes on source segregation, on source segregation. अलग अलग करना है वहीं पे, यही अच्छा एक सेकंड देखो, ये सोर्स सेग्रीगेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अब आपको मैं समझाता हूँ सोर्स सेग्रीगेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसका रियल केस था, आप सबने मैरिको सुना होगा, उनका एक प्रोडक्ट था बहुत से पैराशूट. ठीक है, अब पैराशूट की जो सबसे पहले बॉटल्स आती थी, दे यूज्ड टू कम इन स्टील, ऐसे वो टिन कैंस. ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होती थी कि भैया इस पे इजीली रैट चढ़ जाते थे और खड्डे कर देते टिन के अंदर. तो इसको डील करने के लिए उन लोगों ने बॉटल को थोड़ा कर्वी किया जिसपे रैट टिक न सके, और सेकेंडली उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया, हार्ड प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट किया.
सूनर लेटर दे डिसाइडेड कि अब वो जो अपना प्लास्टिक यूज करेंगे उसमें 95% प्लास्टिक रिसाइकलेबल होगा, कि भैया इट कैन बी इजीली यूज्ड अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। बट उनका 95% रिसाइकलिंग का जो प्लान था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? क्योंकि सोर्स सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। ये प्लास्टिक बाकी प्लास्टिक से मिल ही जाता है जब डंप कर रहे होते हैं, तो कभी सोर्स सेग्रीगेट नहीं हो पाया। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि ये वाला प्लास्टिक अलग हो जाए, बाकी अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब्स फॉर सोर्स सेग्रीगेशन, कॉमा प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन and adopts polluter pays principle for sustainability, and adopts polluter pays principle for sustainability, and adopts polluter pays principle for sustainability. And adopts polluter pays principle for sustainability. Next up, next point लिखना, through the plastic waste management rules. Next point सुनो ना, through the plastic waste management first amendment rules का ब्रैकेट में लिखना first amendment, through the plastic waste management ब्रैकेट में लिखना first amendment rules, they have put up a blanket ban, they have put up a blanket ban, they have put up a blanket ban on single use plastic, on single use plastic. Puts up a blanket ban on single use plastic. Thank you dude. मधु तुम्हारा नाम क्या है? मैं बताता हूं, देखो दोस्तों क्या बढ़िया चीज बताई। मधु का नाम मधु है, who happens to be my wife, हमारी काम वाली दीदी। मेरा दिमाग घूम गया, मेरी तशरीफ फट गई। मेरी काम वाली बाई का नाम है रेहाना। तुम बताओ मालिक कौन लगता है, नौकर कौन लगता है? नहीं मतलब तू बता, उसके माँ बाप मॉडर्न थे, तू सोच रही है? नाम तो अमीरों वाला रख सकते थे। मधु अमीरों वाला नाम है। अगर 10 गरीबों का नाम लिखता ना तो 11वां नाम मधु लिखता। रिहाना, कैसी बातें कर रही है? रिहाना है। तो एक बार इसको बोल के ट्वर्क करके दिखाए, देखना इसको नेचुरली ट्वर्क आता हो। नहीं सच में, लाइव बच्चे तुम हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारी काम वाली दीदी का नाम रिहाना है। मेरी तशरीफ पड़ी हुई भाई, मतलब क्या ही चीज है भाई। मैंने उनसे झाड़ू छीना, मैं ये क्या कर रही हो, तुम गाना गाओ। तो ठीक है। हाँ तो हम दोस्तों कहाँ थे? प्लास्टिक प्लास्टिक के चक्कर में कहाँ चले गए बातों बातों में। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। ओके, नेक्स्ट सेट डालेंगे की इनिशिएटिव्स बाय इंडिया। मैं गई यार, वो मैं कभी वापस आके तो बुलाता हूं उसको। हाँ जी, तो की इनिशिएटिव्स बाय इंडिया ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये अपन ने पूरा एज इट इज पढ़ा हुआ है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बढ़ा दो, इसे पूरे देखो तो, पर ये भी अच्छा आंसर है।
ये दिखता 3 पेज पर एक अच्छा आंसर है। ये कनक तुम मुझे अप्रिशिएट कर रही हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। कनक कह रही है सर ईएसजी में जून 2024 में 59 मार्क्स आए थे, आपकी वजह से एक नंबर से रह गया। आई थिंक तुम ऐसा कहना चाह रही थी, सर आपकी वजह से पिछली बार ईएसजी में 59 आए थे, एक नंबर से रह गया, होप इस बार बहुत आराम से क्लियर हो जाए। आई थिंक तुम कनक ऐसा कहना चाह रही हो। ये तो तुमने मुझे मैच का मुजरिम बना दिया शब्दों में। आओ चलिए, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट अप इज की इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉमन ही लगाया, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, कूल। कह रही है दिस सेशन इज ग्रेट, छोड़ है। चलो गो अहेड एंड राइट। फर्स्ट, इंडिया हैज सजेस्टेड अ मिनिमम थिकनेस, एबीसीडी करके लिखते चलेंगे। इंडिया हैज सजेस्टेड अ मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इंडिया हैज सजेस्टेड अ मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स India has suggested a minimum thickness of plastic bags which should be at least 20 microns okay. B, plastic carry bags have become one of the plastic carry bags have become one of the plastic carry bags have become one of the biggest contributor of littered plastic waste. Biggest contributor of littered plastic waste. One of the biggest contributors of littered plastic waste. And it takes 1,000 years. And it take 1,000 years to decompose it completely. To decompose it completely. Because of which India has put a ban on single-use plastic. Because of which India has put a ban on single-use plastic. And has increased the minimum micron level to 40. And has increased the minimum micron level to 40. And has increased the minimum micron level to 40. The minimum micron level to 40. Next point. Further again in 2016, तो देखो पहले इन लोगों ने रखा 20, फिर इसको बढ़ाया किया 40. फर्दर इंडिया
increased the minimum thickness to 50 microns, तो पहले 20 फिर 40 भी लाए, अब 50 भी लेके आए और आगे बढ़ेगा to 50 microns in order to allow collection and recycle लिख सकते हैं, in order to allow collection and recycle of plastic waste, ठीक है। Now I want to put up another head. अब जो मैं लिखा रहा हूं ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, जो मैं आपको लिखाने वाला हूं. सो पुट अप द क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016? पुट अप द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016? ये अलग से क्वेश्चन लिख लेना. व्हाट इज द एम ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016? A increase the minimum thickness of plastic carry bags, to increase the minimum thickness of plastic carry bags, to 50 microns, to 50 microns, to increase the minimum thickness to 50 microns. B, to extend the jurisdiction to rural areas, C, to put responsibilities on producers to collect back plastic waste. To collect back plastic waste as per the extended producer's responsibility. Next up. To introduce collection of plastic waste management fees. To introduce collection of plastic waste management fees. To introduce collection of plastic waste management fees. From the producers and importers of plastic bags. From the producers and importers of plastic bags. Next point, imposition of polluters pay principle. इसको ट्रिपल पी कहते हैं, polluters pay principle.
imposition of polluters pay principle on those who are not complying with the provision of these rules, on those who are not complying with the provision of these rules, who are not complying with the provision of these rules, who are not complying with the provision of these rules through environmental compensation schemes, through environmental compensation schemes. Next, every producer and importer shall get themselves registered. Every producer and importer shall get themselves registered. Next point. Specified information. Next point. Specified information. Specified information shall be. Specified information shall be printed in English. ठीक है, and that's the last topic we're going to do, that's EPR. Put up the next slide. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज सिंपल एज दोस्तों, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल. सर पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, मुन्ना मुते हैं मुन्ना ही साफ करेंगे, मुन्ना की गलती है मुन्ना ही भरेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. आपने अगर कंप्लायंस नहीं किया, आप ही की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप कॉम्पनसेट करोगे. आपको ही वेस्ट वापस से कलेक्ट करना है, आपकी जिम्मेदारी. अगर आप नहीं कर पाए तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो पुट अप द हेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर देखिए, दिस इज बेस्ड अपॉन पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल. It is based upon polluters pay principle. It is based upon polluters pay principle, which aims to bring the producers of the goods, which aims to bring the producers of the goods, which aims to bring the producers of the goods in the management and treatment of waste, in the management and treatment of waste, in the management and treatment of waste. Next up, by EPR, it puts up clear responsibilities. By EPR, it puts up clear responsibilities on the producers for waste collection as well. In the collection. Next point. EPR has several advantages. EPR has several advantages. EPR has several advantages
EPR has several advantages as it makes the actors also involved. It makes the actors also involved in the reduction of carbon emission. In the reduction of carbon emission. In the reduction of carbon emission. Next point, in other words, next point, in other words, in other words, the producers, in other words, the producers are made responsible. The producers are made responsible. In other words, the producers are made responsible. In other words, the producers are made responsible for financing as well as organizing prevention. For financing as well as organizing the prevention and management of plastic waste. Prevention and management of plastic waste. Prevention and management of plastic waste. एक पॉइंट और लिखेंगे, 2 पॉइंट्स और लिखेंगे वैसे। आ जाओ नेक्स्ट अप। एक मिनट से मेरे को देखने देना। और लिखते हैं। Okay. Next point, to do this, next point, to do this, the contributions from the producers, the contribution from the producers, to do this, the contribution from the producers the contribution from the producers are given to the PRO. PRO मतलब producer responsibility organization, are given to the PRO. which is usually organized by all the producers together, which is usually organized by all the producers together, which is usually organized by all the producers together. अब ये लोग क्या करते हैं ना, एक एक प्रोड्यूसर अलग अलग खर्चा करे, इससे अच्छा क्या एक पीआरओ बना देते हैं, पीआरओ के अंदर सारा पैसा डाल देंगे,
अब ये पीआरओ क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे पीआरओ मिलकर बना देते हैं, विच इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मिशन ऑफ दीज पीआरओज, the mission of these PROs is to work upon reduction slash recycling and reuse of the plastic waste, is to work upon reduction slash recycling and reuse of the plastic waste। लिख लें तक, ये ठीक है, सब फालतू है। Last head, EPR in India, that's last, EPR in India। Extended producer responsibility in India। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट, इफ एनीवन इज आइडेंटिफाइड एज पीबो, पीबो इज प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर, इफ एनीवन इज आइडेंटिफाइड एज पीबो, if anyone is identified as PIBO which uses plastic packaging, which uses plastic packaging or plastic material, or plastic material, or plastic material, then irrespective of their turnover, then irrespective of their turnover, they fall under EPR, irrespective of their turnover, they fall under EPR। Next point, all the PIBOs are responsible to, all the PIBOs are responsible to, all the PIBOs are responsible to, all the PIBOs are responsible to A, register at the EPR portal of the Government of India, register at the EPR portal of the Government of India, B, submit their annual action plan, B, submit their annual action plan, C, fulfill the following obligations, C, fulfill the following obligations, A, promote recycling, A, promote recycling, A, promote recycling, B, use of recycled content, आपको रिपोर्ट करना है इस पे कितना रिसाइकल किया, कितना रिसाइकल कंटेंट यूज किया, द यूज ऑफ रिसाइकल कंटेंट, सी, रीयूज, डी, engagement in collection and recovery of plastic, engagement in collection and recovery of plastic, engagement in collection and recovery of plastic,
submit their annual returns, submit their annual returns, and if required, next point है, if required engage other PROs, if required engage other PROs, if required engage other PROs. Done. If required engage other PROs to achieve their targets, to achieve their targets. समाप्त. तो दोस्तों आपकी पूरी अमेंडमेंट शीट का हर पॉसिबल आंसर आपको लिखा के दे दिया, एंड आई एम रियली होपिंग दैट नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम टू यू विद रिगार्ड्स टू अमेंडमेंट्स. आई फील 5 से 10 नंबर के बीच में आना चाहिए. एक क्वेश्चन तो शॉर्ट आएगा इसके अंदर से, विच आई वाज प्रीटी मच श्योर. तो अपन ने प्रॉब्ली 5 से 10 नंबर कमाए पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर फॉर श्योर. ठीक है पब्लिक. सो दिस फिनिशेस ऑफ आवर अमेंडमेंट्स फॉर द सेशन, एंड आई होप आपने सारे के सारे चैप्टर्स अब लिख ही लिए हैं आपके पास. थैंक यू सो मच. तो कल आगे बढ़ेंगे, वापस से थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे. कल चर्चा करते हैं कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं. डू यू वांट मी टू मेक यू रिवाइज आरएम? डू यू वांट मी टू मेक यू रिवाइज आरएम? क्योंकि आरएम मैंने एक बार ऑलरेडी आप लोगों को पूरा करा दिया है, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी सेशंस है मेरे. तो आरएम रहने दे. ठीक है, 19 और 28 देखना है. ठीक है, आई डू दैट. 19-20. ठीक है. डन दोस्त, आई गो थ्रू दैट. 19 और 20 करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर. दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ. सी यू अगेन टुमारो. हैव अ गुड वन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाय.